ओके सो लेट्स गेट इनटू सम फील्ड और उसके हम्म अंदर सी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है नरेश भाई। ओके सॉरी या आर यू एबल टू सी नाउ अभी हाँ अभी आ गया ओके so वापिस से। I want you to explain these different fields which we covered yesterday ये एक एक ओके फील्ड इसमें क्या क्या है why are we going to configure this ठीक है। तो आइडेंटिफायर ठीक है, वो तो एक आईडी हो गया अपना correct है। लेबल में लेबल का नाम लिख सकते हैं। लाइक सपोज आइडेंटिफायर में इफ यू आर मेंशनिंग एम्प्लॉय, देन लेबल में वी कैन मेंशन रिलीजन और ब्लड ग्रुप। सही है। sorry what is it I'm sorry अगर आइडेंटिफायर में इफ यू आर मेंशनिंग एम्प्लॉय, ओके, इन लेबल वी कैन मेंशन लाइक ब्लड ग्रुप और रिलीजन और समथिंग लाइक दैट। identifier ये हाँ आईडी, दिस इज, okay ये तो आईडी है, सी इट नेवर चेंज। correct मतलब आप, yeah है ना। right तो इन लाइक सपोज नेशनैलिटी इज देयर, hmm. तो लेबल में, लेबल के अंदर कैन वी मेंशन लाइक इंडिया। हाँ see uh, that is not how it works अविनाश ये nationality बोल के है see this is not a custom string okay यस। अगर कस्टम से कुछ बनेगा तो यू कैन चेंज द लेबल नेम एज यू वांट एंड यू कैन मेंटेन एनी डेटा ओके बट देर दीज आर स्टैंडर्ड फील्ड्स तो इसमें ऑलरेडी प्री कोडिंग रहेगा ओके okay you are not telling anything what should be part of this field okay you have not mentioned the reference object you have not selected the type of reference object यहाँ पे पिक लिस्ट भी नहीं है but when you try to maintain nationality for any of the employees by default you will be able to see all the countries okay nationality is related to your country which nationality you belong to so when you talk about standard fields they already have some mapping they already have some data behind it okay which will not be able to see but when you try to maintain for an employee you'll be able to see the related data in the drop down okay so in case if you want to change the label name it should be very much related to this if you don't want to use nationality probably you can write something like citizenship okay then people will know okay I think I have to include my current citizenship so citizenship is somewhere related to nationality but in case if you say blood group then यहाँ पे क्या होगा nationality shows you the list of countries ओके गॉट इट blood group will have the list of your blood groups different O positive AB positive A minus वो सब दिखेंगे so you are not relating this label name and the field और अगर नहीं भी लिखे और नेशनैलिटी लिखे तो कोई प्रॉब्लम है? no जस्ट problem लीव इट see नेशनैलिटी, ठीक है। nationality is the actual ID and the label name which the system has given you ठीक है, तो जब वही भी लिखने का ना, आपको फोकट दिमाग कस्टम नहीं लगाना। कस्टम अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इट मींस इट्स अ स्टैंडर्ड फील्ड और स्टैंडर्ड फील्ड के लिए स्टैंडर्ड आईडी भी देंगे और लेबल नेम देंगे तो अगर आपको ओके कुछ चेंज करना है तो आपको कंट्री बोल के सेलेक्ट कर सकते हो या सिटीजनशिप बोल के सेलेक्ट कर सकते हो नहीं तो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऐसा रिलेटेड वर्ड्स यूज कर सकते हो यू कैन नॉट कंप्लीटली चेंज द फील्ड गॉट इट। ओके अगर ब्लड अपना ग्रुप तो भी चेंज करना है तो स्टैंडर्ड फील्ड है क्या देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बोल के कुछ है क्या नहीं है तो जस्ट ट्राई टू सर्च हियर BLOD बोल के ट्राई करो कुछ नहीं मिल रहा है then it means you that standard field does not exist then you have to go to the custom field then when you know that blood group will be a string value string बोले तो क्या है it will accept special characters alphabet numeric decimals everything ऑल तो O पॉजिटिव बोल के लिखना है तो इट मींस यू हैव कैरेक्टर्स देयर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस इज अ स्पेशल कैरेक्टर और अ सिंबल तो वहां पे अगर आप नंबर कैरेक्टर यूज करोगे लाइक लेट्स से कस्टम डेट या कस्टम लॉन्ग इज फॉर नंबर कस्टम नंबर्स, डबल इज फॉर डेसिमल तो ये सब यूज करोगे तो प्लस शायद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सो अगर आपको प्लस ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव वो पॉजिटिव के लिए अगर आप प्लस यूज करना चाहते हो देन इट हैज टू बी अ स्ट्रिंग टाइप इन केस इफ दे से दैट
लास्ट मेडिकल टेस्ट डन, बोले तो what kind of data do you want to maintain there? Last medical test completed on, बोले तो what should be the data type? डेट आएगा ना. Date आएगा, exactly. So you will not be using string there. You should use date type. डेट वाला फॉर्मेट. हाँ, तो you might pick up anything. Normally वो sequence में जाते हैं, पहले one select कर लेते हैं, then you will say blood group और medical test completed on, बोल के ये. So the system will give you an option to maintain only date for these kind of fields. Okay. Similarly, if someone will say that वो savings का details maintain करना है, नहीं तो let's say आज करेंसी का वैल्यू, व्हाट इन केस इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, INR का आज करंट करेंसी का वो कन्वर्जन रेट डालो, देन यू विल प्रोबेबली राइट इन डेसिमल्स. सो डेसिमल्स के लिए यू कैन नॉट यूज डेट, you can use string also, but it is better to use double. Okay, क्योंकि it's a decimal type of object or decimal type of data. कन्वर्शन चार्ज कन्वर्शन रेट में नॉर्मली वो 76.85 76.46 ऐसा डेसिमल्स में रहेगा. इट्स नॉट अ राउंड फिगर ऑल द टाइम. सो टू based on the data that you're trying to maintain, your data type will change. Okay. ठीक है. then next fields. ठीक है. ये सब तो लेबल डन, इनेबल डिसेबल जो भी. ठीक है. देन मैंडेटरी, इफ यू वांट टू मेक इट मैंडेटरी, स्टार लग जाएगा. डिफॉल्ट लेवल जो भी आपको लिखना हो, शॉर्ट में लिख सकते हैं, लैंग्वेज स्क्रिप्ट देन LS. Data type string. Okay, what is the significance of this one? What is what? Why do this we is use this? I think वो उसके लिए ना, डिफरेंट कंट्री का लैंग्वेज. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे अगर ये मैं 4 लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे है और इटालियन के लिए मेंटेन नहीं है, तो व्हाट विल द सिस्टम डू व्हेन देयर इज नो लैंग्वेज मेंटेन फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड? System would not show definitely if we are not mention anything. नहीं, System will show only English default language. जो default ये दिखाएगा, जो अपना default language है, default वाला वही दिखाएगा ना. हाँ करेक्ट. ये जो भी हम डिफॉल्ट में मेंटेन करते हैं, हाँ, that will become Italian and Turkey because you have not maintained. हाँ वही आपने बताया था ना. या आपने GB सिलेक्ट कर रखा है, तो जहां पर अगर लैंग्वेज नहीं तो GB में ही दिखाएगा. करेक्ट. ठीक है. देन टाइप ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो भी तीनों में से, देयर आर 3, पिक लिस्ट, एम्प्लॉय एंड ऑल. So you have to select reference object में. If you are selecting a foundation object, then we need to copy and paste or like type it here. Correct. So that is specifically for foundation object only. Correct. Then you got a pick list. So if you are dealing in pick list or employee or any other field, then you create pick list in pick list center and you can link here. Correct. Then parent field for pick list, that is also there. That this like जो भी अपन select कर रहे हैं, just like string 5, string 6 or string 7, whatever you can select here, so it will match up, right? Yeah. Okay, then visibility. Visibility we can mention edit or can't be edited or something like that. Masked way, if you want to hide some data, like you doesn't want to show to someone, then you just make it yes, and if you don't want to hide, then you just make it no. Right. Okay. Log read access, then maximum length. log read access में क्या था? वो ऑडिट करने के लिए, वो फील्ड किसने चेंज किया, कब चेंज किया, वैसे वो ऑडिट लॉग्स में अगर ये दिखना चाहिए. ठीक है. Then maximum length we can manage in words or numbers or whatever. Maximum fraction digit, ये नहीं पता है नरेश भाई. तो ये डेसिमल्स कितना दिखना चाहिए? अच्छा, that is for numbers, right? या डिजिट मतलब. अच्छा ठीक है, उसका भी अपन सेट कर सकते हैं लिमिट.
यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस नहीं, यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट बोल के 2 बोल के सेट करोगे तो इट विल अलाउ ओनली 2 डेसिमल्स. अच्छा, ओके ओके. या नेक्स्ट. शो ट्रेटिंग जीरोस, ये पता नहीं मेरे को ट्रेटिंग जीरोस क्या है. ट्रेलिंग जीरोस इज, वो जीरोस दिखना चाहिए कि नहीं. अगर नंबर का फील्ड है और नंबर के बाद 0.000 ऐसा है, तो अगर वो हम्म राउंड फिगर है या कुछ भी है, अगर जीरोस दिखाना है तो यस बोल के दोगे, तो इट मींस अगर नंबर के पास ऐसा है तो नंबर्स भी हम्म, ये जीरोस भी दिखेंगे. अगर जब ओके. भी जीरोस आएगा मुझे नहीं देखना है, हम्म तो यहाँ पे नो बोल के कर दोगे, तो जब भी आप ऐसा टाइप करोगे या नंबर में जीरोस आएंगे वो निकल जाएंगे, वो डिस्प्ले नहीं होगा. हम्म Because you said I don't want to see any trailing zeros after the number. हम्म ठीक है. हम्म. Yeah. देन अलो इंपोर्ट, जो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. देन रिफ्रेश कंपनसेशन रिक्वायर्ड, रिफ्रेश कंपनसेशन रिक्वायर्ड, ये भी नहीं पता भाई मेरे को. So this one I've told you that in case if any of the field changes will reflect or impact your compensation. हम्म. अगर वहां पे कुछ रिफ्रेश होना है स्क्रीन, based on that your compensation might get changed. अगर let's say अच्छा, आपका. आपने बताया था, और डेजिग्नेशन चेंज हो गया तो Correct. डेफिनेटली इसमें भी चेंज Exactly. होगा. Yeah. Correct. ओके ओके, गॉट इट. ये मुझे देखना है. नेक्स्ट वी हैव फील्ड क्राइटेरिया. यहाँ पे विल गेट इन टू दिस लेटर ऑन, क्योंकि इट विल बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हम्म ओके, सो फील्ड क्राइटेरिया के लिए विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एसोसिएशंस. हम्म Okay, then we have HRA sync mapping. This one we'll understand when we'll talk about employee profile. हम्म Okay, उसके बाद लास्ट में रूल्स हैं. सो मैंने बिजनेस रूल्स बोला था ना, हम्म वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं हम. आइदर फील्ड लेवल पे, सी दिस इज फील्ड लेवल बोलते हैं, क्योंकि वी वेंट इनसाइड द फील्ड. हम्म ओके, ये पोर्टलेट में, पर्सनल इन्फो पोर्टलेट में एक फील्ड बना है. हम्म फील्ड के अंदर भी हम बिजनेस रूल्स डाल सकते हैं. जस्ट हम्म रिमेंबर दिस नाउ ब्लाइंडली, विल हम्म गेट इनटू दिस लेटर. देन यहाँ पे नीचे भी, पोर्टलेट के नीचे, ये पोर्टलेट है, हम्म हम्म और यहाँ पे नीचे भी ट्रिगर रूल्स बोल के है. तो जहां पे भी हम्म आपको रूल्स बोल के दिखेगा, इट मींस देयर यू कैन कॉन्फ़िगर एंड असाइन बिजनेस रूल्स. हम्म ठीक है. हम्म सो यू विल सी सिमिलर सेटअप इन एवरीथिंग. यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी पोर्टलेट्स हैं और उसमें फील्ड्स हैं, यू हम्म पिकअप एनी ऑब्जेक्ट, एनी सॉरी एनी पोर्टलेट, उसमें सेम सेटअप रहेगा. हम्म ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा. सॉरी, नॉट दिस वन. इसके अंदर जाओगे तो you will see different fields. Now this is related to global information for United Arab Emirates. हम्म So यहाँ पे आइडेंटिफायर है, लेबल है, enabled मैंडेटरी, और उसके बाद डिटेल्स में जाओगे तो सेम सेट ऑफ फील्ड्स यहाँ पे भी दिखेंगे. हम्म ओके. नाउ I'll tell you what is this global info, and हम्म जॉब इन्फो के अंदर भी हमें कंट्री स्पेसिफिक जॉब इंफॉर्मेशन मिलेगा. ओके. हम्म सो the reason why we got into manage business configuration is we were discussing about succession data management or succession data model, हम्म right? So we covered country specific, corporate data model and country specific corporate data model. हम्म Succession data model बोले तो ये portlets है, so which we were हम्म discussing for last 2 to 3 days. Okay, तो जो हम्म भी हम हर कंट्री के लिए कॉमनली यूज करते हैं वो सब ग्लोबल बोलते हैं. ठीक है. हम्म And whatever fields that you configure or maintain for specific country, all those fields will be considered as country specific fields. हम्म Okay.
तो जैसे हमने कॉर्पोरेट डेटा मॉडल और कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में देखा है कि कॉर्पोरेट डेटा मॉडल विल बी कॉमन फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल द कंट्रीज, और कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट एड्रेस, इट मीन्स each company or each country will have their own set of fields to maintain addresses, and you cannot use a particular set of fields which you are using for a particular country for another country. जैसे इंडिया के लिए हमारे पास स्ट्रीट नंबर है या प्रॉब्ली पिन कोड है, यू विल नॉट बी एबल टू यूज पिन कोड इन सम अदर कंट्री. ओके, यूएस में शायद ब्लॉक्स बोल के यूज करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक बोल के. हाँ, इंडिया में वो ब्लॉक बोल के यूज करोगे तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा. सो इट मीन्स देर आर वेरी स्पेसिफिक फील्ड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सर्टेन कंट्रीज. सो वैसा कुछ कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स रहेंगे तो वो सब हम कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल में मेंटेन करते हैं. ओके, सो this one and this one, both of them can be configured using manage business configuration. This one, you don't have to open the data models to maintain succession data model or country specific succession data model. So यहाँ पे जो भी देख रहे हो ये सब 95% पूरा सक्सेशन डेटा मॉडल है. ओके, अगर आपको कंट्री स्पेसिफिक में जाना है तो यू हैव टू थिंग्स हियर. वन इज ग्लोबल इन्फो, यहां पे है ना. दिस वन इज अ कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल. जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, ग्लोबल इन्फो. उसके बाद जॉब इन्फो. Global info. Okay, so these are the two things which are country specific, which will be under country specific succession data model. ठीक है. So sorry. Okay, so global info में हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, कंट्री स्पेसिफिक पर्सनल इन्फो. ठीक है. और जॉब इन्फो, कंट्री स्पेसिफिक जॉब इन्फो में सिर्फ जॉब इन्फो रिलेटेड फील्ड्स स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर कंट्री हम मेंटेन करते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो इनटू ग्लोबल इन्फो. So when you go into global info, you are seeing only one field, but this is not where you configure all the fields. What you have to do is you have to click this arrow button. Okay, when you click on this arrow button, you will see lot of country specific objects. Okay, ये अर्जेंटीना का है, ये बेल्जियम का है, ये चाइना का है. This is for Germany. This is for Spain, Finland, India, Ireland. So ये 3 डिजिट कोड को हम ISO कोड बोल के बोलते हैं. Okay, so and this is actually a standard 3 digit code. This is not specific to success factors. जैसा हमने IND देख रहे हैं, वो कंट्री स्पेसिफिक है. या सो ग्लोबली वो कंट्री का स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड है ये टू आइडेंटिफाई अ कंट्री बेस्ड ऑन द कोड. तो इसको ISO कोड बोलते हैं. सो ये ग्लोबल इन्फो अंडरस्कोर ARE बोलो तो दिस ARE रिजेंबल्स अ country. Argentina. ARG is Argentina. I'm not sure about Achha. ARE. Then DEU. Okay, this is for Germany. Even though Germany starts with G, but वो ड्यूश कुछ ऐसा बोलते हैं ना जर्मनी के लिए. डश. या सो वो DUE बोल के यहाँ पे. CZD is Czech Republic.
Next we have KOR, Korea, JPN, Japan, कजाकिस्तान, उसके ITS, बाद yeah, correct. So, इटली इटली in case if you want to maintain any or configure any field specific to a country, which is specific to their personal information only. Okay, remember this global info is related to your personal information and country specific personal information के लिए ही हम यहाँ पे आते हैं. If you want to configure a field on the personal info portlet which all the countries wants to use, like let's say surname बोल के field हमारे personal information में नहीं है and some of the countries wants to maintain it. So when lot of countries in your organization wants to use a particular field, then you can configure it directly at the personal information portlet. It will be visible to all the countries. But if a country says that, see, I want you to configure this particular field, and I think no other country in my company will be using this field. So it is very specific to my country. Okay. Then what you have to do is you have to come to this global info, click on this, and let's say अगर India ने कुछ field request किया है and which is very specific to India, you have to click on this one, global info _ India. And then here you can see the list of all the fields which are standard. Okay, ये सब actually existing fields हैं which are delivered by SuccessFactor. इसमें से जो भी field है, if you think that new requirement is matching any of these fields, you can use any of these fields and just change the label name. But if you think none of these fields are relevant to the requirement that you have, then you have to go into custom fields. Okay. Then you create a custom field, and as usual, you will give it a label name. You maintain translation. You enable it, and then you have to go into the same thing, same steps. So when you configure this, what happens is, now I'll show you how this will be displayed at the employee level. See, this is personal information portlet. ठीक है? Now, whatever fields that you configure in personal info, यहाँ पे, this one, in this section, that all those fields will be visible here. Okay, on the top section. उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे global information बोल के है. Okay, so global information is the place where you will maintain country specific fields. Okay, so यहाँ पे when you select global information, it will ask you which global information you want to use. So you will be selecting whatever country that you want to maintain for. Okay, अगर मैं इसमें edit में जाऊंगा and in case if I want to select a particular country, normally ऐसे दिखेगा add global information बोल के. So you have to click on this and then it will ask you for the country. Let's say if you want to maintain fields or data related to India, then you have to select India, और India select करते ही India का जितने भी fields हैं यहाँ पे, see ये India का fields है, यहाँ पे क्या क्या fields हैं, date learned, challenge group, degree of challenge, type of challenge, issuing authority. Let's see same fields है कि नहीं. Date learned, challenge group, degree of challenge, type of challenge, issuing authority, same fields है. Okay, let's say if you don't want to use any of these fields, मैंने ये India में ये सब disable कर रहा हूँ because I don't want to capture all this. Date learned, degree of challenge, challenge group is all the fields related to disability. Okay, मैं यहाँ पे सिर्फ religion maintain करना चाहता हूँ, number of children maintain करना चाहता हूँ,
नेम ऑफ द फादर, हस्बैंड एंड ब्लड ग्रुप. ओके, तो मैं ये सेव कर रहा हूँ. So it means I have disabled some fields which I don't want to. Okay, custom string. Initial entry date, entry into group, corporation. ये कहाँ है? लग रहा है मुझे कोई और कंट्री स्पेसिफिक इसमें कुछ एरर है, उसकी वजह से ये सेव करने नहीं दे रहा है. वो एक बार चेक करना पड़ेगा. तो इफ वी डिसेबल दीज फील्ड्स, व्हाट विल हैपन इज, जब आप ग्लोबल इन्फो यहाँ आके इंडिया के लिए फिर से सेलेक्ट करोगे तो ऑल दिस फील्ड्स विल नॉट बी विजिबल. व्हाट एवर फील्ड्स दैट यू हैव एनेबल्ड हियर, सिर्फ वही दिखेंगे. We look into this error later. Okay, so this is the place where you will be configuring all the global info or country specific personal information fields. Okay, let's say if you want to configure some fields related to US only. Okay, फिर आपको नीचे आना है थोड़ा, यहाँ पे USA बोल के है, तो USA बोल के सेलेक्ट करना है. तो you will be able to see all the list of fields which are specific to USA. यहाँ पे देखोगे तो और ज्यादा fields है. देखो यहाँ पे रिलीजन है, आई थिंक इट्स नॉट, दिस इज अ कस्टम फील्ड. जेनरिक बोल के जो भी है ये सब स्टैंडर्ड फील्ड्स है. तो लीगल सेपरेशन डेट, तो अगर इनके सेपरेशन बोले तो वो डिवोर्स लेते हैं ना, डिवोर्स का उनका डेट भी कैप्चर हो रहा है. बट इन इंडिया वी आर नॉट कैप्चरिंग दिस डेटा. ओके, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू यूएसए. डेट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम, date of providing proof of medical absence, physician ID number, financially independent. इतने सारे फील्ड्स हैं. ऑन मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री का तो वहां पे आई थिंक मैंडेटरी जैसा है कुछ एज ग्रुप के लिए. सो मेनी पीपल गो इनटू मिलिट्री सर्विस. इंडिया में वैसा कुछ नहीं है. सो इवन इफ यू वांट टू कैप्चर दिस डेटा, एटलीस्ट 95% ऑफ द पीपल वॉन्ट इवन नो व्हाट इज दिस, क्योंकि कोई मिलिट्री में हमारे इंडिया में वो मैंडेटरी नहीं है, तो कोई जाता भी नहीं. बट यूएस में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे स्पेंड इन मिलिट्री फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स. तो इन केस इफ दे हैव सर्व्ड फॉर मिलिट्री, दे कैन इवन मेंटेन ऑन मिलिट्री सर्विस यस और नो, ऐसा कुछ. ये देखो और भी फील्ड्स है, स्मोकर और नो. ओके, तो ऐसे फील्ड्स हम इंडिया में मेंटेन नहीं करते. But USA wants to maintain these fields. So these fields are very specific to USA, and these fields are your personal information. Are you a smoker or not? This is not related to your job information or your company. Okay. Military service में हो कि नहीं, this is related to your job. Are you financially independent or not? ये भी आपका personal details है. Physician ID बोला तो आपका डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर ऐसा कोई है तो उसका फिजिशियन नेम और उसका आईडी नंबर. ओके, देन सेपरेशन मींस इफ यू आर डिवोर्स, वो डिवोर्स का नंबर, डेट कब से है, वो वाला डिटेल्स भी हम कैप्चर कर रहे हैं. तो दीज फील्ड्स इन केस इफ ओनली यूएसए वांट्स टू मेंटेन, then you will come to global info and then you will select that respective country, global info underscore that country, and then you start configuring those fields. तो ये सब फील्ड्स हमें कहां पे दिखेंगे? पर्सनल इन्फो के नीचे ग्लोबल इंफॉर्मेशन बोल के यहाँ पे दिखेगा. सो यहाँ आके जो भी कंट्री के लिए आप वो कंट्री स्पेसिफिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फील्ड्स मेंटेन करना चाहते हो, वो फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे व्हेन यू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सिमिलरली इवन फॉर जॉब इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी हैव अ सेपरेट पोर्टलेट. ओके, सो जॉब इन्फो के लिए दिस इज द वन.
which is global. बोले तो this is for all the countries. अगर आपको जॉब इन्फो में भी कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स मेंटेन करना है, ओके, देन यू विल क्लिक दिस एरो की, यहाँ पे है ना जॉब इन्फो के बगल में, you click on this and see again job info underscore country, that ISO country का ये 3 digit code दिख रहा है. So if you want to maintain job information USA, you click on job information underscore USA. So when you click on this, you will see a set of fields, and these fields, some of them can be common for most of the countries, but still these fields will appear only when you select USA as your country of employment. Okay, so if you are working in India और जॉब इंफॉर्मेशन का रिलेटेड आपको कुछ मेंटेन करना है, तो इफ योर वर्क लोकेशन इज इन इंडिया, यू कैन नॉट मेंटेन डिटेल्स ऑफ यूएसए. Okay, you can maintain the details only related to your employment related to India only. Okay, similarly if you are working in USA, then वो कंट्री का जॉब इन्फो फील्ड से आपको मेंटेन करना पड़ेगा. So based on your country of employment, the system will by default show the list of all the fields which are related to that particular country. Okay, so पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे हमें वो कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओनली देन दैट विल शो यू द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यू माइट बी वर्किंग इन इंडिया बट योर पर्सनल डिटेल्स आर फ्रॉम यूएसए बिकॉज यू आर a US citizen. तो पर्सनल डिटेल्स कैन बी कॉमन but global information can be from a different country. Your personal information. But when it comes to job information, ऐसा नहीं है. Job information में your job details should be in the same country, and also your country specific job information should also from the same country wherever you are employed. Okay, so did you get the difference? Yeah. तो यहाँ पे हमें personal will be common for everyone. And then global personal info, this will be country specific, and this can be from any country. Job info के लिए क्या है, your job info portlet, this will be common for everyone, and country specific job info will be specific to your country of employment. So the difference here between country specific personal info and country specific job info is, country specific personal info में you can select your respective country where you belong to and you can maintain those details. Okay, like let's say, I'll give you an example. If you have come from USA and you're working for India for almost like 2 years, but let's say you have some disability and you have some certificate from the US government, okay, related to the disability. So when you come to this personal information portlet, you will be maintaining your personal details. Okay, but this personal details, it is they have actually come from USA. Okay, issuing authority कौन है, वो certificate US government. Okay, so you cannot maintain the details of India because those personal details that you are maintaining, they are related to USA. So that is why probably your personal information might differ. Okay, you might be working in another country, but where you belong to is what you maintain in the global information. But when it comes to job information, your country of employment and your job information both should be same. So even your country specific fields will be from your country of employment. You cannot maintain or select a different country there. Okay, तो यहाँ पे जॉब इंफॉर्मेशन में अगर हम आएंगे,
तो सबके नीचे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फील्ड्स आपको नीचे सबसे नीचे आओगे तो देन यू विल बी एबल टू सी द फील्ड्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस एम्प्लॉई आई थिंक शी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका. Okay, so how do you know where she's from which country she belongs to? यहाँ पे आओगे तो see this is where company code, this is company, so she belongs to South Africa. और location even this one is from South Africa. तो साउथ अफ्रीका की बंदी है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का फील्ड्स कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स ही दिखेंगे. तो इनकेस इफ यू वांट टू सी एनी स्पेसिफिक फील्ड्स रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका का आई थिंक ZAF है. So if you want to configure something for related to South Africa, you can come here and configure those fields. Okay, तो यहाँ पे दो ही fields enabled है. One is the country of company and the other one is contract type. ये दो fields South Africa के लिए enabled है. ये देखो. All the other fields are set to no. Right? So it means only these two fields should be visible for this employee. Let's see if we have those fields. ये देखो contract type. Okay, ये कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी है. कंट्री बोल के आई एम सॉरी यहाँ पे कंट्री बोल के सर्च करेंगे तो should be able to see. Let me search. ये देखो कंट्री है. ओके, तो कंट्री फील्ड है और कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी है. सो दीज आर द टू फील्ड्स which are country specific. These fields will not be visible for all the countries because you have configured them specifically inside South Africa job information. This is South Africa and this is related to job information. Okay, similarly if I select some other employee, some US employee, पता नहीं कौन है US employee. इस एम्प्लॉय का कंट्री देखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया. या इंडोनेशिया की है. सो नाउ व्हाट विल डू इज विल गो टू इंडोनेशिया जॉब इन्फो. इंडोनेशिया का क्या है? सॉरी ये है क्या? एक बार क्लिक करके देखेंगे. हाँ हाँ यही है. या वही है. करेक्ट. सो यहाँ पे भी दोनों ही फील्ड्स हैं. ओके, सो कंट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप. Now in case if we can open any US employee, we'll be able to see a lot of other fields also. USA का कैसे सर्च करेंगे? US employee. ओके, यूएस के लिए यहाँ पे देखोगे तो सी यू हैव सम फील्ड्स लाइक ईओ जॉब ग्रुप, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, एफएलएसए स्टेटस. ये सब यूएस के लिए स्पेसिफिक फील्ड्स है. Let's go into US job info. USA. Let's see what all fields are enabled here. Okay, we have FLSA status, country है, pay scale type, pay scale area, competition clause, secondary employment, probation period. ये देखो यहाँ पे ये पूरे yes है.
इतने सारे fields. Okay, EO Employee job can see group them. ये भी है, Hmm. right? It means all these fields can be configured, I'm sorry, can be seen only for US employees. And यहाँ देखो yes. country है, पे स्केल ग्रुप, पे स्केल लेवल, EO ग्रुप, FLSA, कॉन्ट्रैक्ट टाइप. सो इतने सारे फील्ड्स है और भी 4 है. प्रोबेशनरी पीरियड, टेस्ट फील्ड, ओके, कंपटीशन क्लॉज, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट अलाउड, ये देखेंगे यहाँ पे. Okay, secondary employment allowed, competition clause, all these fields are enabled. So the same fields are visible to this particular employee. Why? Because this employee's country of employment is from USA. So Hmm. we did not see these fields for South African employee or for Indonesian employee, because दो जो भी fields हमने उनके country के हिसाब से हमने maintain किया है, वही fields दिखेंगे. Okay, so whatever fields that you see on top of it, okay, country के नीचे जितने भी fields हैं, all these are from the country specific job information. Any fields on top of it will be from the actual job information यहाँ पे. Okay, so this is the global one. This are the all these are country specific. So ग्लोबल का जॉब इन्फो अगर हमें इसमें चेंज करना है, सो दिस इज जॉब इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कोई कंट्री का फील्ड नहीं दिख रहा है, देखो आईएसओ कोड नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इट विल बी कॉमन फॉर ऑल द कंट्रीज एंड दीज चेंजेस विल बी डन इन सक्सेशन डेटा मॉडल. Okay, but if you want to make any changes, add fields or remove fields in the country specific job info, then you will make the changes inside each of these countries. So when you click on this one, यहाँ पे job info के बाद underscore IND बोल के दिख रहा है. So it means this is specific to India only. So whenever you see country like this, it means this is related to country specific succession data model. Okay, so when you have where is it, yeah, so कॉर्पोरेट डेटा मॉडल हमने डिस्कस किया, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल डिस्कस किया. यहाँ पे हमें फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस मिलेगा. सक्सेशन डेटा मॉडल में ग्लोबल फील्ड्स, इट मींस दीस आर रिलेटेड टू ऑल द कंट्रीज, which are common for all the countries. Country specific section data model में only country specific personal info और जॉब इन्फो मिलेगा मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो नीचे दोनों सक्सेशन एंड कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, दीज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग manage business configuration. You don't have to go into the data model to make these changes. Yes. But when it comes to corporate data model and country specific corporate data model is the only way you can make some changes. Foundation objects. Yeah. ठीक है. So let's wind up now, and what we'll do